कुछ वक्त के लिए आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे. Please know that our God is able to hear everyone's prayer at the exact same time. So if you'd like to pray in English, you can pray in English. If you'd like to pray in Urdu, you can pray in Urdu. If you'd like to pray in Punjabi, agar tusi Punjabi ch dua karna chahte ho, it makes no difference to our God. You can open your mouths and begin to give him thanksgiving. Apne labon ko kholiye aur uska shukriya karna shuru kijiye. Begin to give him thanksgiving. Wo shukr guzari ke laik hai. He is worthy of our thanksgiving. Pichle guzre saal ke liye uska shukr kijiye. Thank him for the year that has passed. Thank him for his faithfulness. उसकी वफादारी के लिए जो गुजरे साल में हमारे साथ थी, उसका शुक्र कीजिए, उसका शुक्र कीजिए that he was our provider, that he was our protector, that he was our healer, that he was our sanctifier, that he was our deliverer, that he was our rescuer. शुक्र कीजिए कि हमें मुहैया करने वाला वो है, हमें छुड़ाने वाला वो है, हमें शिफा देने वाला वो है. और गुजरे साल में he has faithfully done so. He is worthy of thanksgiving. वो शुक्रगुजारी के लायक है. वो लायक है कि हर एक जुबान खुले और उसका इकरार करे कि मेरे खुदा, मेरे बाप, तू शुक्रगुजारी के लायक है, तू वफादार खुदावंद है. मेरे होंठ, मेरे लब तेरे लिए खुलेंगे. I will exalt you in the house, for you are good. You were good. हम में से बहुत थे that were terminally ill. हम में से बहुत थे जो बहुत बीमार थे, लेकिन खुदावंद ने उनको गुज़रे साल में महफूज रखा, कायम रखा. वो शुक्रगुजारी के लायक है. हम में से बहुत थे जो हार मान चुके थे. We had given up. We were ready to throw the towel, but God kept us in. वो शुक्रगुजारी के लायक है. हमारे खिलाफ शैतान के बहुत मंसूबे थे. They were calculated attacks that were against us. हमारे खिलाफ, हमारे खानदान के खिलाफ शैतान के मंसूबे थे, लेकिन खुदावंद ने हाथ बढ़ाकर हमें बचाए रखा, हमें महफूज रखा. वो शुक्रगुजारी के लायक है. He did not let the enemy sabotage us. He did not let the enemy destroy us. He did not let the enemy take us under. Give him praise in the house. अपने हाथों को जोड़िए. Begin to give him praise, क्योंकि वो भला है. The enemy calculated, but still God overcame and he saved us. Hallelujah. I know that the spirit of suicide was working. खुदकुशी की रूह काम कर रही थी, लेकिन खुदावंद के रूह ने हमें बचाए रखा. बहुत थे जो तैयार थे अपनी जिंदगी लेने के लिए, but God's spirit came in. To him be the praise. Hallelujah, hallelujah. और बहुत थे जो इस आज़माइश में थे कि हम अपनी राहों में वापस चले जाएं. But it was the love of God that held you, that kept you. He's worthy of thanksgiving. He's faithful. शुक्रगुजारी हो तेरी खुदावंद, शुक्रगुजारी हो. आइए सब मिलकर बर्रे के लहू के लिए शुक्र करें. Today is the first Sunday. We also celebrate the Lord's Supper. हम इसी दिन खुदावंद की मेहज़ को भी मिलकर शामिल होते हैं. मेहज़ में उसके बर्रे के लहू की शुक्रगुजारी कीजिए. हर एक जुबान इकरार करे. Begin to give him thanksgiving. Thank him that it is by the blood that we are saved. उसके बर्रे के लहू के वसीला से ही हम बचाए गए हैं. We are saved, we are healed, we are restored, we are sanctified by the blood of Jesus, and to his name be the praise. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. उसकी शुक्रगुजारी कीजिए. लबों को खोलिए, अपने दिल को खोलिए उसके हुजूर. गुजरे साल के लिए, गुजरे दिनों के लिए, गुजरे महीनों के लिए वो लायक है कि हम शुक्रगुजारी उसकी करें. And now by the power of the blood of the Lamb, अब उसी बर्रे के लहू के जोर के तहत, let every chain, let every shackle, let every yoke be broken in the name of Jesus. Any advantage that the evil one has over us, any advantage that he has over us,
I bind it and cancel it in the name of Jesus. और सब शैतान के हथियारों को यीशु मसीह के नाम से आज मैं कैंसिल करता हूँ. We cancel them by the power of the blood. Hallelujah. शुक्रगुजारी कीजिए उस बर्रे के लहू की. शुक्रगुजारी कीजिए कि शैतान का हर वो मंसूबा, हर वो लानत जो उसकी तरफ से थी, खुदा के बर्रे के लहू के सबब से अब वो हमारे ऊपर से कट गई है. हालेलुया. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father God, we thank you that you answer by fire. रबो यकसेरे यलादे यकसरबो. तू आग से मेरे बाप जवाब देता है. सो हर वो मंसूबा, हर वो लानत, हर वो बीमारी, हर वो शिकंजा जो शैतान का है, अब तेरी आग नाजिल हो और तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं. आजादी. I proclaim freedom. I proclaim freedom. I proclaim this year as the year of freedom. यीशु मसीह के नाम से मैं आजादी का ऐलान करता हूं हर एक जान के ऊपर, क्योंकि बर्रे का लहू जोरावर है. यरबो यगलाही अकसेरेबे. Lastly, it's in my heart that we pray for a way out. ये कसिंदे है रबो. बहुत हैं. There are many who are in shame. Father, would you make a way out? There are many who are trapped. Lord, would you make a way out? There are many who are suffering. Father, would you make a way out? A way out for them. A way out of their trial. A way out of their bondage. A way out of their addiction. A way out of their suffering. A way out of their sickness. A way out. A way out. हर कोई कहे a way out. A way out. A way out in the name of Jesus. अपने हाथों को जोड़िए और जो दुआएं सुनता है उस खुदावंद के लिए भरपूर ताली जाइए. हालेलुया. हालेलुया. कोई कहे हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. I speak liberty in the house, freedom in the house, deliverance in the house. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Hallelujah. Father, I pray कि आने वाले साल में no one that is here would be a victim of any mishap. जहां जहां ये सफर करें, खुदावंद तू इन्हें mercies देना. Give them traveling mercies. Lord, whether they travel by planes, whether they travel by trains, whether they travel by Uber, whether they travel by car, whichever way they go, they would be protected by your angels. No mishap, no immature deaths this year, my God. इस साल में है बाप हम मांग लेते हैं that there would be no immature deaths, no immature deaths, no immature deaths in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, the Spirit of God is here. Would you help me to welcome the King of Kings and the Lord of Lords in this place? बादशाहों के बादशाह को खुशामदीद मेरे साथ मिलकर कहिए. Hallelujah. Oh, hallelujah. Woo. Hallelujah. Glory Jesus. While you are standing, turn with me to 2 Kings. Yarabo yakase. As you're standing, turn to 2 Kings. जब हम खड़े हैं तो हम कलाम का हिस्सा भी पढ़ लेते हैं. दूसरा सलातीन, 2 Kings. Oh, hallelujah. I know some of us still have a praise left in us. We'll get to it. Glory Jesus. Glory Father. Glory. Glory Jesus. Glory. Glory. I don't know if you came here by mistake. I don't know if you're watching online by mistake. But God is putting it heavy in my heart
This year, God is making a way out for you. Whatever you're struck in, your way out is coming. Jesus. 2 Kings chapter 20. दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब पहली 6 आयत. This is the word of the Lord. In those days, Hezekiah was sick and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live." Then he turned his face towards the wall and prayed to the Lord, saying, "Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight." Hezekiah wept bitterly, and it happened before Isaiah had gone out into the middle court that the word of the Lord came to him, saying, "Return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer. I've seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my own name's sake and for the sake of my servant David." Put your hands, if you're able to, on your heart and just say, "Father, let this word be for me. Holy Spirit, help me to put all my guards down, put all my defenses down, and receive what you have for me for this year." Father, I even pray for myself. In my weakness, let your strength perfect. For it is in Jesus' name I pray. Amen. You may be seated in the house of the Lord. The message that the Lord put on my heart for the new year, नए साल के लिए, जो पैगाम खुदावंद ने मेरे दिल में रखा है, it is set your house in order. अब उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है कि अपने घर का इंतज़ाम कर, पर प्रॉपर ट्रांसलेशन है अपने घर को तरतीब में ला. Bring your house, set your house in order. I wrestled with this. I even texted Pastor Jasper like a week and a half ago. I said, I'm wrestling with this message because this is not a very conventional message for New Year's Day. क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये तो मरने वाला है, और खुदावंद ने इसको कहा कि अपने घर की तरतीब ठीक कर. Set your house in order. Youth, you are dismissed. Youth is meeting today. And so I wrestled with this a lot. मैं बार बार खुदावंद से कहूँ कि खुदावंद ठीक है, शायद इसको संडे के बाद शुरू कर लेंगे, नए साल के बाद शुरू कर लेंगे. But more and more that I prayed, I heard in my spirit that this is for me and this is for this church. ये मेरे लिए, आप सब के लिए और इस कलीसिया के लिए खुदावंद का पैगाम है. Set your house in order. Set your house in order. Set your house in order. As we look at this context, जब हम इसके context को देखते हैं, we see that God sent the fire summoning prophet Isaiah to speak to Hezekiah. हजकिया बादशाह के साथ बोलने के लिए खुदावंद
अपने नबी को भेजते हैं. The messenger comes to Hezekiah. Hezekiah is the 14th king. ये 14वां बादशाह है सल्तनत का. David became king of Judah. जब साउल बादशाह था तो जो सल्तनत थी उस 2 हिस्से हो गई. 10 कबीले जो ऊपर के थे वो इसराइल बन गए, और जो नीचे 2 थे, बिन्यामीन का कबीला, यहूदा का कबीला, वो यहूदा कहलाया. Then David comes into the picture. अब दाऊद के अंदर इतना करिश्मा था और खुदावंद की फेवर थी कि उसने दोनों सल्तनत को फिर से यूनाइट कर दिया, एक कर दिया. So the first for 7 years, 7 साल दाऊद जो था वो यहूदा का बादशाह रहा. And then he ultimately was able to regain favor in all of the other 10. दाऊद के बाद 40 साल तक उसने हुकूमत की. उसके बाद उसका बेटा सुलेमान आया, और सुलेमान बादशाह के दौर में भी ये दोनों सल्तनतें एक थीं. Both of the kingdoms were one. They were the original United Kingdom. Now, after Solomon's death, जब सुलेमान की death हो गई, the kingdom was divided again, because now that the king that came, people didn't like him. And so again, बंटवारा हो गया. It was 10 and 2. 10 tribes divided themselves, and they were known as Israel. And the southern, you can say, tribes or whatever, they were Judah. And so all but a handful of kings were good. जितने भी यहूदा के बादशाह आए, सारे एक तो एक वध करना नलायकी सन. They were all one after another. They were corrupt kind of kings, real messed up kind of guy. Only a handful were good. बस चुने हुए कुछ बादशाह थे जो अच्छे थे. उनमें से एक बादशाह ये है हेzekiah. हिजकिय्याह बादशाह एक बादशाह उन चुने हुए बादशाहों में से है who is actually good. वो अच्छा खुदावंद के हुजूर में बादशाह है. Look at chapter 18 of 2 Kings. दूसरा सलातीन 18वें बाप में we see the good qualities of this king. इस अच्छे बादशाह की कुछ खूबियां लिखी हैं. In verse 3 we read that he was right in the sight of the Lord. वो खुदावंद की नजर में ठीक था. In verse 5 we see that he trusted the Lord. वो खुदावंद पर भरोसा रखने वाला इंसान था. In verse 6 कहाँ में लिखा है that he would fast before the Lord. वो खुदावंद के हुजूर में रोजे रखता था. छठी आयत में that he kept God's commandments. वो खुदावंद के हुक्मों को मानता था, रखता था. In verse 7 that the Lord was with him. खुदावंद उसके साथ था. 7वीं आयत में कि खुदावंद ने इसके वसीला से असीरिया को शिकस्त दी. God defeated the Assyrians because of him. And in the same way, verse 8, he defeated the Philistines. And so this is a king who has a pretty good resume. इसका resume बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है. He is a good man and he is a good king. ये अच्छा इंसान है, अच्छा बादशाह है. But still he got a terminal illness. फिर भी उसको जानलेवा बीमारी हो गई. He got sick. And to add to that, इसको चलें बीमार है, फिर भी इंसान के अंदर ना कोई उम्मीद रहती है. बीमार होए भी ना तो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है. खुदावंद एक कदम और आगे जाते हैं और एक नबी को भेज देते हैं कि go tell him you're not going to get better. जो भी उसकी उम्मीद है down. Matter of fact, you're going to die. ना ही तू ठीक हो रहे हैं और ना ही तूने बचना है, तू मरेगा. One would think, why? Please remember, याद रखिए, this is not the judgment which is sent to Hezekiah, but this is God making him aware out of his goodness. ये अदालत नहीं थी इसके खिलाफ हो रही. God wasn't passing a judgment. This was God demonstrating his goodness by reminding him that you are going to die, so get your house in order. Our God is a loving God. And he wishes no one to perish. हमारा खुदावंद नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो. Hezekiah was one who walked rightly with God and did what was right in his eyes. He walked in the ways of his father David, but he was sick. And the loving kindness of God was that he was preparing him for the day which his time on earth will end, and that he will go before God. याद रखिए
कि हेzekiah का जो बाप है, now that was a messed up king. He was a messed up king. His name was Ahaz. He was one of the guys, वो एक बादशाह ऐसा था जो बच्चों की कुर्बानियां चढ़ाता था. In front of the temple of Baal, in front of the erected temples of the Assyrian god, वो अपने बच्चों की और हुकूमत के जो बच्चे थे उनकी कुर्बानियां चढ़ाने वाला शख्स था. He is the one who erected palaces for the Assyrian gods. He set up altars for Baal. और हेzekiah ने अपनी जिंदगी में जो कुछ गलत काम इसके बाप ने किए हैं उनको रिवर्स करने में ही लगा दिए. He was doing everything he can to undo the things of his father, the wicked works and acts of his father. But lovingly, God is telling him, your days on this earth will end. और मोहब्बत से खुदावंद हेzekiah को कह रहे हैं कि इस ज़मीन पर तेरे दिन ख़त्म होने हैं और होंगे. Our days, loved ones, just like Hezekiah, will end on this earth. हिजकिय्याह को दो पैगाम आए. एक कि तू मरेगा, दूसरा अपने घर को ऑर्डर में ला. और हमारे लिए भी यही कलाम है कि हम मरेंगे. You're like, Pastor, why? Why a message like this? I said the same thing. Why, God? Why a message like this? I believe in the same way God is reminding us that our days on this earth, loved ones, will end. And we must consider this wisely. And we must be diligently considering this. Is my house in order? क्या मेरा घर order में है? This year, 2023, we must put our house in order. One of the greatest deception of the enemy is that he tells us we will not die. शैतान का जो एक बहुत बड़ा deception, धोखा है ना, वो ये है कि वो लोगों के ज़हनों में ये बात रखता है, तू नहीं मरेगा. तो ध्यान रख अपना, तो दवाई टाइम रखा, eat your medicine on time, exercise, be comfortable, you're not going to die. और वो सोच ही हमारे ज़हनों में नहीं आती. He was doing this even in the beginning. पैदाइश में भी वो यही बातें कर रहा था. Go with me to Genesis 3:4. पैदाइश 3 बाब 4 आयत. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. तू बेशक नहीं मरे, you are not going to die. तू कैसे मर सकती है? And look at the world around us. अपने आसपास देखिए. Many live their lives as if they will never come to the end of this brief time on earth and meet the reality of death. बहुत हैं जो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताते हैं, मैं कभी नहीं मरना, मेरे अंदर मरने वाली वो शय ही नहीं है. I'll beat death, I'll cheat death, I'll do this to death, I'll never. Please understand that the time we are on this earth is a very small fraction. It's a small portion. We have an eternity to think about. And the Word of God is telling us today that this little time, sooner or later, is going to end. And we must consider putting our house in order. Hebrews 9:27 says this, Ibraniyo 9 bab 27 ayat. And as it is appointed for men to die once, and after this, the judgment. ये हर एक के ऊपर लागू है कि उसने, सब कहेंगे जी, मरना है, उसने मरना है. Every one of us is going to die. और उसके बाद हमने अदालत में पेश होना है. Every one of us, there's no exception. There is no one who is free of this. हर एक ने अदालत में खड़े होना है. This is the truth. This life will end. For some it will be soon. For others it will be later. But just like Hezekiah, we are being reminded today to get your house in order. Jesus said this in Luke 12:16. And he spoke to them in a parable and saying, the ground of a certain rich man yielded plentiful. एक शख्स था जिसकी बहुत ज़्यादा फसल पैदा हुई.
And he thought to himself, saying, उसने अपने आप में ये सोचा, what shall I do since I have no room to store up my crops? अब इतनी फसल हो गई है, इतना पैसा आ गया है, इतनी चीजें आ गई हैं, मेरे पास जगह नहीं इन चीजों को रखने के लिए. So he said to himself, this is what I will do. मैं ये करूंगा, I will put down my barn and build greater. मेरा गराज बहुत छोटा है, मैं डबल गराज ले लूंगा. And there I will store all of my crops and my good. Look at this man that Jesus speaks of. He is living his life as if he's going to be here forever. वो अपनी दौलत ऐसे कमाई जा रहा है, स्टोर करा जा रहा है, as if he's going to stay forever. But look at the very next verse. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for you for many years. Now you're all set. Your retirement is all set. Your 401k has paid you out. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, this night, आज की रात तेरी आखिरी रात है. All of that. और आज की रात आखिरी रात है. So is he who lays up treasures for himself and is not rich towards God. और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो शख्स इसकी मानंद है जो यहां पर ही दौलत कमाए जा रहा है और आसमान पर वो गरीब है. Remember, loved ones, our houses is yes a place that we live in. जब हम इस चीज की बात करते हैं to get our house in order, हमारा घर जो है वो बेशक वो जगह है जहां हम रहते हैं. But scriptures through many ways describe our house as this. हमारा घर, हर कोई अपने अपने घर को पॉइंट करे जी. हमारा घर ये है. This is the house we need to get in order. Why? Because we're going to die. दूसरा करंथियों 5वां बाब पहली आयत. For we know that if our earthly house, अगर हमारा दुनियावी घर, this tent is destroyed, we have building from God. पहला करंथियों 6 बाब 19वीं आयत. Or do you not know that this house, this body, is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not yours, but His. When we refer to bringing this house in order, we need to bring this house in order on every level. हर सतह पर हमने इस घर को तरतीब में लाना है जी. हर सतह पर, at every level, this house needs to be brought into order. God created us body, flesh, soul and spirit. खुदावंद ने हमें जिस्म, रूह और जान बनाया है. Body or the flesh is the physical part of a man which wants only what feels good. Lust and pleasures and anything that feels satisfying. The soul is the part of the man that feels, that thinks, that reasons, that plans. And spirit is that which is breathed in us through God. In getting our house in order, जब हम अपने घर को ऑर्डर में लाने की बात करते हैं तो इन तीनों सतह पर, with our flesh we need to be in order, with our soul, desires, liking and wants we need to be in order, and with our spirit we need to be in order. We must acknowledge that there is disorder at all levels. हर जगह पर disorder है. Disorder है. Look around us. There's disorder amongst the political leaders. There are disorders amongst spiritual leaders. There are disorders in our families. There are disorders in our marriages. There's disorder everywhere. हर सतह पर फसाद है, disorder है. And if you want to see things come into order around you, the order must start here. अगर हम अपने आसपास चाहते हैं कि फसाद खत्म हो, disorderly चीजें बंद हो, तो सबसे पहले यहाँ order लाएं. The first step in getting our house in order is to acknowledge that there is a disorder. Come on, somebody say amen. If we continue to believe that there's no leak in a leaky roof, we will eventually have an entire house flooded and everything in it will be destroyed. सबसे पहली बात जो है ना कि disorderly चीज को order में लाना कैसे है, मान लो कि disorder है.
मेरी जिंदगी में डिसऑर्डर है, मेरी रूहानी जिंदगी में डिसऑर्डर है, मेरी सोचों में डिसऑर्डर है, मेरी ख्वाहिशों में डिसऑर्डर है, मेरी प्रायोरिटीज में डिसऑर्डर है, मेरी चीजों पे डिसऑर्डर है। जब हम मान लेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मानना। पर ही पंजाबियां ऐसी क्यों मनी है, मेरे में डिसऑर्डर नहीं, तेरे देखने में डिसऑर्डर है। पर हर चीज को तोलने वाला यह कलाम है। It's this word that will ultimately, ye tarazu hai, this is the measure. This is what will say if it's in order or not. If we continue to live out lives thinking that it is not out of order, we will never seek the Holy Spirit. अगर हम इस चीज में convicted रहें, convinced रहें कि no, there's no disorder in my life, मेरी जिंदगी में क्या disorder है, कभी भी हम पाक रूह से मदद नहीं मांगेंगे कि हमें उस चीज से निकाले। Mark 3:25, Markus 3 बाब 25 आयत. And if a house is divided against itself, अगर एक घर ही, I think उर्दू में लफ्ज था फटा है, something like that, फूट पड़ी, that's the word. अगर घर में ही फूट पड़ी है तो वो कैसे कायम रहेगा? But please remember, inside of this house, phoot padi je. This house is divided. This house is divided. Let me help you. The flesh and the spirit are divided. Galatiyon 5 बाब 7 आयत में यूं लिखा है, for the desires of the flesh are against the spirit. जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, जो जिस्मानी attractions हैं, जो जिस्मानी तौर पर हमें चीजें पसंद हैं, the Bible is saying they are against the spirit. And the desires of the spirit are against the flesh. और जो रूह की ख्वाहिशें हैं, जो रूह की desires हैं, वो जिस्म के खिलाफ हैं. For these are opposed to each other. हम अंदर ही फटे हुए हैं, फूटे हुए हैं. Inside, right here, we are divided to keep us from doing what is good. Romeo 8 बाब 13 आयत. For if you live according to the flesh, you will die. अगर हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही जीते रहें, हम जरूर मरेंगे, सेपरेट रहेंगे खुदावंद से. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body of the flesh, you will die. और रूह की हदायत से अगर हम जिस्मानी ख्वाहिशात को मार देंगे तो हम रूह में जिएंगे. कहें आमीन. It's important that we understand. It is so important that we understand this truth. That if a person is not born again, अगर कोई शख्स नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, if there is anyone sitting here or if there's anyone watching online, if you are not born again, अगर नए सिरे से आप पैदा नहीं हुए, then the Bible considers that as you being only of the flesh. आपकी रूह अभी भी मुर्दा है, आपकी रूह खुदावंद से जुदा है. Your spirit is dormant. It is separated from God. The things of this world are the only things that satisfy you. Therefore, new birth, नए सिरे से पैदा होना जरूरी है. You might be sitting here thinking, I have no desire to be in fellowship. रफाकत के में होने के लिए मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं. I have no desire to be in the word of God. खुदावंद के कलाम को पढ़ने की मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है. I have no desire for prayer. मेरे अंदर दुआ करने की कोई ख्वाहिश नहीं है. I have no desire to do anything for the kingdom. अब याद रखिए, to consider something good and to desire something good are two different things. आप ये जान सकते हैं कि दुआ करनी चाहिए. Let me help someone. I'm telling you, I wrestled with this word because it's for someone. आपके अंदर शायद ये knowledge हो कि यार दुआ करनी चाहिए, लेकिन अगर ख्वाहिश नहीं है, रूहानी डेथ है. I'm going to say it as it is. You can know this. Hey, I have to be in fellowship. मुझे रफाकत मसीहियों के साथ रखनी है.
आप इस इल्म को रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक जेन्युइन ख्वाहिश नहीं, देयर इज स्पिरिचुअल डेथ। आपके अंदर ये नॉलेज हो सकता है, आपके अंदर ये इल्म हो सकता है कि यार रोज मुझे थोड़ा कलाम पढ़ना चाहिए, ये मेरे रूह के लिए रोटी है, लेकिन अगर आपके अंदर ख्वाहिश नहीं पैदा हो रही, देयर इज डेथ इन द स्पिरिट। रूह में मौत है। क्यों? क्योंकि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, when we are born again, उसका पाक रूह हमारी रूह को जिंदा करता है। Then we begin to have a desire, हमारे अंदर दूध पीने की, रूहानी दूध पीने की ख्वाहिश आएगी, हमारे अंदर रूहानी गोश्त खाने की ख्वाहिश आएगी, हमारे अंदर उसको जानने की, उसके साथ रिफाकत रखने की हो जो है, we will have a desire, ख्वाहिश आएगी हमारे अंदर। पर वो तभी है जब हम रूह में जिंदा हैं। अदरवाइज वी कैन डू ऑल रिचुअलिस्टिक थिंग्स, जो भी रवायती चीजें कोट के करो, धूमधाम नाल करो, but please don't be in any way misled that it is okay to walk on both sides of the spectrum. That is not how God calls us to be. रूहानी तौर पर जिंदा होना जरूरी है। It's important. Otherwise, we will be in a continuum. Now, अगर आप रूह में जिंदा हैं और आपका दिल करता है, ख्वाहिश भी है, लेकिन आप कर नहीं पाते, that's a good place. That's when we wrestle. यहां पर आकर रूह में कुश्ती हो रही है. That is a healthy place. लेकिन अगर कोई ख्वाहिश ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं है, हफ्ते गुजर गए हैं, महीने गुजर गए हैं, खुदावंद की हुजूरी में नहीं, दुआ में नहीं, उससे कलाम नहीं मांग रहे, उससे अपनी जिंदगी के लिए डिजायर नहीं है कि वो हमें बताए, there is an issue and we need to hit it. Amen. यूहन्ना 14 बाब 26 आयत लिखा है, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. जब हम रूह में जिंदा हो जाते हैं तो उसका पाक रूह फिर आकर हमें सिखाता है. We can only overcome the desires, wants of the flesh when we are submitted to the Holy Spirit. Getting our house in order is both a dependency on the Holy Spirit and a personal discipline. Amen. Now, I had to be very careful in this statement because sometimes my statements are taken all out of context. लेकिन अपने रूहानी घर को, इस जिस्म को तरतीब में लाने के लिए हमें फजल, ग्रेस और रूहानी डिसिप्लिन दोनों चाहिए. Now be careful because I preach salvation by faith alone and no works. That's what I preach. Dependency is in the sense that we cannot do it without Him. We can do nothing without Him. We cannot grow. We cannot understand the Word. And discipline is in the sense that despite not wanting, we must bring our flesh into submission and do what is needed. I heard a preacher say something, thought it was good. He said, before you can be devoted to anything, you must first be disciplined to it. In order to bring your house in order, we might need to reprioritize our priorities. We might need to change our schedule. We might need to have a courage to ask for a change in our work schedule. We might need to wake up early and sleep early. We might need to change our choice of music and literature. We might need to limit our time on our phones and social medias. Remember, salvation is by faith and not without work. But godliness, deendari, requires work. Oh, amen. Did I just fly over? Najat ke liye सिर्फ ईमान की जरूरत है, किसी काम की नहीं. लेकिन दीनदारी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जिस्म को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है. Amen. When we think of order implies a neat and a logical organization of items, tasks, or people. When a room is in order, it is tidied up and everything is in its proper place. Are things in the right order in our lives?
क्या हमारी जिंदगी में चीजें तरतीब में हैं? बढ़कर इससे क्या हमारी रूह, our spiritual affairs, तरतीब में हैं? Where does your spiritual life, your spiritual walk, your spiritual growth line up in the greater scheme of things? Is it a 2024 project? Is it a 2025 project? Or is it a now? As God's word comes and says, you will die, get your house in order. We must come to the reality that maybe our spiritual life is not in order. अगर हम यहाँ पर हैं, praise the Lord. That just, अगर आप में से कोई भी यहाँ पर है कि वाकई मेरी रूहानी जिंदगी it's not in order, तो praise the Lord, क्योंकि आज खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है. Amen. For those of you who got it, who are doing it, kick your feet up, relax. This ain't for you. But this is for me. And if your spiritual life is not in order, this is for you. And God cared so much to change, not that I have a say in it, but to change the schedule, to put it on today's calendar. I've often heard people say, we don't have time for prayer. We don't have time for Bible reading. We don't have time for devotion. We don't have time for church. We make time for anything and everything when we want to. Are the affairs of our spirit in order? For we will surely die. And at the time, it will not matter how much you have gained on this earth. जब मौत आएगी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना कि आपका घर कितना बड़ा था या आपके पास कितनी अच्छी गाड़ियां थी. What will matter is what you have gained in the spirit. सिर्फ एक चीज ही है जिसका उस वक्त पर आकर हिसाब होगा कि रूह में कितनी हमने कमाई की है. Working on earth and earning a wealth is ज़मीन पर काम करना, दौलत हासिल करना, investing your money in purchases and buildings of spectacular home. That's okay. That's all right, loved ones. But is this house in order? Because here's the thing, हम अच्छे और बड़े और खूबसूरत घर ले सकते हैं, और हम अच्छी बीवी और खूबसूरत बीवी और अच्छे शौहर से शादी कर सकते हैं. लेकिन अगर ये घर ऑर्डर में नहीं है ना, अगर यहां पर डिसऑर्डर है, तो उस नए घर में भी हम डिसऑर्डर ही लाएंगे, और उस नए रिश्ते में और उस बीवी के साथ और अपने अज़वाज में हम डिसऑर्डर ही लाएंगे. Why? Because if this house ain't in order, there's no other house that can be brought in order. Is this house in order? Because if this house is not in order, we will bring disorder even to our dwelling places. If this house is not in order, we will bring disorder to our relationship. There will be disorder. At the start of the year, जैसे ही साल शुरू होता है, कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि हर कोई जिम में मेंबरशिप लेता है. मुझे नहीं पता, लेते होंगे. मैं साल के मिडल में लेता हूं. पैसे अद्धे देने पैंदे ने साल दे. Everybody goes and joins the gym. We get on all of these diet plans. We do all of these things. Word of God says this, पहला तिमोथियस चौथा बाब 8वें. Nothing wrong with that. I'm for that. आपने पूरे साल के पैसे देने हैं, दीजिए, मैं आधे साल के दूंगा. 1 Timothy 4:8 says this, for bodily exercises profits a little. वर्जिश करना थोड़ा फायदेमंद है. But godliness is profitable for all things, having, here now, promise of the life that is now and the life that is to come. जब हम इस जिस्म को ऑर्डर में लाते हैं जिस्मानी तौर पर, तो फायदा है. We'll live healthy. कईयों के लिए सगों नुकसान होता है कि डाइट दे पैसे इन्ने लग जाते हैं, right? But we get a little healthy. कपड़े अच्छे फिट आते हैं, बार बार चेंज, फायदा है. I'm not totally against it. But the word of God is saying, but if this inner man, this spirit, godly, if this is in order, तो इस जमीन पर भी फायदा है और आगे भी फायदा है. Hallelujah.
If we want miracles to increase in our life, first we must set our house in order. Removing chaos, mess, haphazardness, randomness, laziness, slothfulness, corruptions, arguments, envy, pride, greed, every kind of disorder needs to come out. James chapter 3 and 16. Ayub तीसरा बाब 16वीं आयत. I'll read this in the New American. For where jealousy and selfish ambitions exist, there is disorder. जिस घर में, जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस अज़वाज में, where jealousy and self ambitions exist, जिस दोस्ती में, यारी में, where self ambitions exist, जिस रिश्ते में, जिस घर में jealousy and self ambitions exist, there is disorder. There's disorder. And every evil thing. But the wisdom that is from above is pure. It's peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and of good fruit. There are many who are here today, maybe, or many who are watching online, and your hearts are filled with anger and bitterness. आपके दिल नफरत से, गुस्से से भरे हुए हैं. चेहरे पे नजर नहीं आता. ऐसे लेटेस्ट मेकअप आ गए हैं, लेकिन दिल जो हैं भरे हुए. They're filled with unforgiveness. माफी नहीं है. एक दूसरे के खिलाफ गलत सोचें, दिल ऐसे भरे हुए हैं. The word of the Lord for us today is get your house in order. अपने घर को ऑर्डर में लाइए. Maybe you're full of hurt. शायद आपको सच में किसी से दुख मिला है और सालों साल you've just been holding on to this. इस दर्द को लिए आप चले आ रहे हैं, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कमा रहे हैं, चले आ रहे हैं. अब मैंने इससे भी नहीं बोलना, इससे बच्चे भी नहीं बोलना, इसके बच्चे के बच्चे से भी नहीं बोलना. इंटरेस्ट. You just have bitterness in your heart. Please, loved ones, remember, you disqualify yourself. आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं from being used by God when you refuse to forgive. जब हम माफी नहीं देते, हम अपने आप को फारग कर देते हैं. खुदा हमें इस्तेमाल नहीं करता. I don't want to be used. Just as a blocked artery stops the flow of the blood from our body, similarly, unforgiveness, grudges block God's grace, love, and the might of His power to move through you. Romans 8:19 says this. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. सारी कायनात, सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि खुदावंद के बरगजीदा लोग जो हैं वो उन तक पहुंचेंगे और यीशु की खुशखबरी का पैगाम उन तक जाएगा और वो अपने गुनाहों से आजाद होंगे, वो छुटकारा पाएंगे और वो यीशु मसीह में अपनी जिंदगी बिताएंगे. लेकिन हम इस्तेमाल नहीं उस काम के लिए हो सकते. क्यों? क्योंकि मैनू ना किसी नाल वाटे. I'm mad. I can't forgive you. Really? I can't. Oh, really? Many have shunned their growth. बहुत हैं जिन्होंने अपनी growth रोक दी हुई है. Their ability to be used by God because they have allowed hate, unforgiveness to be rooted up inside of them. The word of God for us today is get your house in order. Don't die with bitterness inside of you. कलाम में है कि तू मरेगा. जहर दे विच ही ना मरी. आजाद कर दे लोगों को. Live free and let them be free. Hallelujah. Take the poison out of you in the name of Jesus. Ephesians 4:32 amplified. Ifsiyan chauथा बाब. Be kind and helpful to one another, tender hearted, compassionate, understanding, forgiving one another readily and freely. सगों तानू मौका लभना चाहिए कि यार किन्नू मैं छेती छेती माफ कर सका.
Why? Because only then do we really, really find ourselves relating to Christ. फिर और हमें कौन सा चाहिए? यहाँ ते जी असी यसु ना इंज रिलेट करांगे ही 5000 रोटी खवाती है. मैं नहीं कोई एडे शेर वे खेलते. This is how we relate to Christ. When we forgive as Christ forgave. Please don't die with bitterness in your heart. Don't grow with bitterness. जैसे आप उम्र में बढ़ेंगे, आपके अंदर वो जहर की तासीर भी बढ़ती जाएगी. Take it out in the name of Jesus. Amen. Loved ones, as we start this year, I don't think we're done with this message. I think Lord's going to keep working on us with this. But take this message home. I need to set my house in order. Start with your soul, spirit, and flesh. Then you start cleaning your house. Set your house in order. हज़किय्याह की कहानी कुछ ऐसे ख़त्म होती है. दूसरा तवारीख 32वां बाब. This is the story of how Hezekiah's life ends. In those days, Hezekiah was sick and near death. ये हिस्सा हमने पढ़ लिया. And he prayed to the Lord, and he spoke to him and gave him a sign. 25वीं आयत गौर से सुनिए. But Hezekiah did not repay according to the favor shown him. जिस तरह से खुदावंद ने उसके साथ डीलिंग की ना, उस तरह उसने खुदावंद को ना अप्रिशिएट नहीं किया. He did not repay God according to the favor shown. Loved ones, we have been showed a tremendous favor. Tremendous favor. Tremendous, tremendous, tremendous favor. All the way from salvation until eternity, there's a favor on us. And God is saying, my ask is the same for Hezekiah. Get your house in order. इसके मानी ये हैं कि हेzekiah ने अपने घर को ऑर्डर में नहीं लाया. खुद वो अच्छी मौत मरा और वो हिल टॉप पर दाऊद की कब्रों के साथ उसको कब्र मिली. लेकिन इसके फौरन बाद एक और लड़का आया जो इसका लड़का था और वो दादे की तरह था. सुपर नलायक. क्योंकि he didn't put his house in order. Now, the Bible says he dies well. But Hezekiah did not repay according to the favor shown him, for his heart was lifted up. जैसे ही खुदा ने 15 साल ਇਹਦੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੇਰ घमंडी हो गया. His heart was lifted up. 15 साल और मैं सल्तनत करूंगा. 15 more years I get to enjoy all my toys on this earth as a king. Therefore, the wrath of God was looming over him and Judah and Jerusalem. अब खुदावन के नबी ने पैगाम दिया इसको कि सिद्धा हो जा, कार नू सिद्धा कर ले. And what did he do? He took the favor, he rejoiced, पर थोड़ी देर के बाद ही पुल आ गया. If you hear this word today, I want to humbly ask you, don't just let it be a good Sunday sermon. Talk to the Holy Spirit through it. खुदा पाक रूह से बातें कीजिएगा. God, where do I need to bring order? What do I need to take out? What needs to be fixed? I want it to be in order. He and the inhabitant of Jerusalem. So the wrath of the Lord did not come upon them. Oh, 26वीं आयत. Then Hezekiah humbled himself. Praise the Lord. Finally mante gaya. For the pride of his heart, he and the inhabitants of Jerusalem, so that the Lord of the Lord did not come upon them in the days of Hezekiah.
God extended Hezekiah's days, and shortly after his heart began to get filled with pride. खुदावंद मौजज़े करता है हमारे लिए. कोई तो कहे आमीन. मौजज़िਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ. But the Bible says, then Hezekiah humbled himself. Today we need to humble ourselves and get our house in order.